अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं या ब्रांड्स की लीड्स को जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्मार्ट स्काउट। In our previous videos, yeah, in other videos, what we have done is we have used the leaf method. We have used the super targeting. Like, there is another way using which we can shortlist brands, and it's quite easy. First of all, if you have the subscription of Smart Scout available, आप Smart Scout पे आएंगे। Smart Scout के आने के पे स्मार्ट स्काउट पे आने के बाद what you need to do is you need to click on brands। ब्रांड्स पे क्लिक करने के बाद what it's going to do is it's going to give you a long list of brands available। Right now it is showing only 23, but this is because there is an issue with, or you can say there is a glitch with this particular tool। ये पुराने filters को इस वक्त यूज कर रहा है। What I need to do is I need to refresh that। Now once this is refreshed, you will be able to see कि almost 1 million से ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे brands की leads आ रही हैं। Now what we need to do is we need to put in few filters, और उन filters को use करते हुए what we can do is we can shortlist brand जो हमारे criteria या हम जिस criteria पे brands को shortlist करना चाहते हैं उस पे जो थोड़ा बहुत पूरा उतर रहे होंगे या उसके बिल्कुल close होंगे, we will be able to analyze those products or those brands here। For example, right now I want to go into beauty category। इसके बाद I want to choose Amazon in stock rate। Now अब इसमें समझने की ये ज़रूरत है, we are not talking about products here, we are talking about brands। अब अगर if what I do is if I put 0 here, what exactly going to happen is कि ये सारे के सारे products को और या सारे के सारे brands को यहाँ से निकाल देगा जिसके अंदर Amazon डोमिनेंट नहीं भी है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, उसके 100 प्रोडक्ट्स हैं और उन 100 में से सिर्फ लेट्स सपोज 10 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो Amazon बेच रहा है। नाउ देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी कि देयर आर गोइंग टू बी 90 प्रोडक्ट्स जिनमें Amazon अवेलेबल नहीं होगा, और उन 90 में से भी हो सकता है हमें 5-10 प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएं जिसमें Amazon नहीं है बट दोस हैव गुड सेल्स। So straight away putting a 0 here is going to eliminate, or you can say take out all those brands जिसके अंदर स्टिल हमारे लिए पेनिट्रेशन क्या रूम अवेलेबल हो सकता है। सो रादर देन आई वुड सजेस्ट के पुटिंग 0 एट द मैक्सिमम, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट अ 10% हेयर कि 10% से ज़्यादा का हमें ऐसा ब्रांड नहीं चाहिए जिसमें 10% से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन सेल कर रहा हो। मूविंग फॉरवर्ड इट इज़ आस्किंग फॉर द एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स। Again, this is not related to product but the whole brand। Same example is going to come here। Normally what we do is we are looking for 3 unique sellers in any product to ensure कि वो private label ना हो, लेकिन we can have options available here as well कि जहाँ पे एक brand के multiple products हैं, उसके अच्छे products के अंदर sellers तो let's suppose 3 या 3 से ज़्यादा हैं, but there are other SKUs जिसके अंदर सिर्फ एक seller available है जिसकी वजह से उसकी average ख़राब हो जाएगी। So what we can do is rather than putting minimum 3 here, what we can do is we can put like 2.1 or you can say 1.5, 1.7 here। Selling price, this is going to be according to our criteria। हम अपना minimum criteria रख लेते हैं कि let's suppose we do not want to sell a product which is, or you can say we do not want to go into products which has an average price of less than $10। मैं यहाँ पे एक minimum price अपनी रख देता हूँ। If you want to put a maximum price also, you can do that। However, again, I would highlight that this is not about a product, this is about a brand। If a brand has a large range of products जिसके अंदर छोटे products भी हैं और साथ ही साथ महंगे बिकने वाले high ticket items भी हैं, तो this average is actually going to eliminate good brands। और आप उनको just because आपने यहाँ पे एक maximum range डाला था, you won't be able to evaluate those। मंथली रेवेन्यू को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ, और what I can do is I can put in a minimum here as well। Same goes for the size। Average rating and review, I will be looking for a minimum 3.5। Total number of reviews, ये इसको भी मैं अगर देखूंगा तो I will be preferring something which is not really new, so I can put a 50 here or 100 here। Now this is very important, total product counts।
I initially, considering myself a newbie, मैं ऐसे ब्रांड्स को यहाँ पे चूज़ नहीं करना चाहूँगा कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं और उनके एक वाइड रेंज है कैटलॉग के अंदर अवेलेबल. आई वुड बी प्रेफरिंग ब्रांड्स जिनकी कैटलॉग अभी छोटी है और मेरे उनके साथ अकाउंट ओपन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी दैट मीन्स वो ब्रांड उतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, उतना ज़्यादा बड़ा है और मेरे उनके साथ बीइंग अ न्यूबी अकाउंट ओपन करने के चांसेस और ज़्यादा स्लिम होते जाएंगे. So what I can do is I can put a maximum of 100 here, for example, and average number of FBA sellers. Now this is a difference. यहाँ पे total number of sellers की बात हो रही है. This includes FBA and FBM. और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है FBA sellers की. Now you can write something here or you can simply skip this as well. And the last one is brand score. Now brand score is very much important. Brand score is something which is an internal score given by Smart Scout. ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे ब्रांड्स जो जिनकी लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज्ड नहीं हैं उनका ब्रांड स्कोर कम होगा और जो अमेज़ॉन के गाइडलाइन के मुताबिक लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज्ड हैं उनका ब्रांड स्कोर ज़्यादा होगा. नाउ इन अमेज़ॉन होलसेल FBA we are looking for products या we are looking for brands especially in the reverse sourcing जहाँ पे improvement का room available हो. This is actually going to be our value proposition, and based on only this proposal we will be able to get the approval from the brand कि आपकी listings optimized नहीं है. What we can do is we can bring in that value which is going to increase your sales by increasing traffic and conversion, and that is actually going to help us get the account more easily. अब brand score जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनको कोई value propose करना. So what I can do is I can search for something which is, let's say, a maximum of 6 or 7. Let's suppose I'm putting in 6 here. After giving these very basic kind of filters, what I'm going to have is कि जहाँ पे मेरे पास products तकरीबन 1 million के करीब थी, now I'm going to have a shorter number or you can say smaller number. And that is 2500. Now this 2500 is still quite a big number. मैं one by one इन सारी products को what do you call it सारे के सारे brands को analyze नहीं कर सकता. So what I can do is I can start putting in more filters. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि there is an option here available of dominant seller. Dominant seller actually means कि जहाँ पे एक particular seller एक brand में majority sales share लेके जा रहा है. So what I can do is I can straight away remove those brands just to ensure कि जो भी brand में जिसको approach करने लगा उसमें already कोई seller अपनी dominancy gain नहीं कर रहा. So by putting in this as blank, almost 500 के करीब यहाँ पे brands मेरे से यहाँ पे और filter out हो गए हैं. Now what I can do is I can use these filters here. यहाँ पे मैं सब कैटेगरी को चूज कर सकता हूँ. If I want to go into any particular subcategory, I can write it here. If I want to, let's suppose, choose stock rate of even less than 10%, and let's say I'm going to put in 5% here. मेरे पास और ज़्यादा कम हो गए हैं यहाँ पे नंबर. And what I can do is I can start, you can say I can filter out more. और इसमें कुछ चीज़ें मैं और ये देख सकता हूँ कि now this is actually totally depending on my strategy. मैं किस तरह के brands को approach करना चाह रहा हूँ. There is an option available of 12 months growth and 1 month growth. If there is a negative growth of any brand, हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. वी कैन शो देम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका अमेजोन के ऊपर जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, and this is actually an alarming position. And what we can do is we can first of all fix it, and after maintaining it we can actually increase this as well. Now this could be a value proposition. इसके अलावा if there is a particular size of the product, अगर हम SNL के अंदर काम करना चाहते हैं, we can put in a filter of SNL. और by playing around with the filters, what we can do is we can very easily pinpoint the kind of brands we want to work with. For example, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ after doing all the filtering thing, and I want to see, for example,
कि how a particular brand is performing. And let's say I'm talking about this. Let's choose a brand which has, let's suppose, okay, so this is a brand by the name Jones Road. Amazon stock rate is 0. नंबर ऑफ सेलर्स आर 28. दैट मीन्स इसको बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो, या बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो इस ब्रांड को सेल करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड इनके टोटल जो यूनिट्स बिकते हैं दैट इज़ रफली अराउंड 21,000, और प्रोडक्ट का साइज़ भी इनका छोटा है. रिव्यू थोड़े से कम हैं, या रेटिंग जो है दैट इज़ अ लिटिल बिट लेस. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी 31 हैं. दैट मीन्स के यहाँ पे जो भी इनकी आइटम्स बिक रहे हैं उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा है. एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं इसके अंदर, तकरीबन 25. आई वुड एक्चुअली लाइक टू सी कि किस तरह के आइटम्स बेच रहे हैं. एंड द ब्रांड स्कोर इज 4.2 ओनली. दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल फॉर इम्प्रूवमेंट. एंड स्ट्रेट अवे स्टोर फ्रंट के सामने क्योंकि क्लिक नहीं या एक टिक नहीं मार्क है, दैट मीन्स कि इनका स्टोर फ्रंट नहीं बना हुआ. दिस कुड बी अ value proposition as well, that we can create a storefront for them. Now, after looking at the initial numbers, if I have my interest available in this Jones Road, I can click on this magnifying glass and I can open the dashboard. कि डैशबोर्ड में मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि किस तरह के आइटम्स ये बेच रहे हैं. दीज आर मिरेकल बाम, एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इज दिस हैव मल्टीपल वेरिएशंस. लाइक देयर इज वन सिंगल प्रोडक्ट बाय द नेम बाम, एंड उस बाम के मल्टीपल वेरिएशंस या मल्टीपल, इट कुड बी फ्लेवर्स और इट कुड बी स्टाइल्स. हम इसको आगे जाके मज़ीद देख लेंगे. ब्रांड स्कोर 4.2 ऑलरेडी हमें पता लग गया है. बहुत ज़्यादा सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं. इट इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट. एवरेज सेलिंग प्राइस इज़ रफली अराउंड $50. प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं आके. सारी की सारी उस ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स हैं या जो डिटेल हैं हमें स्मार्ट स्काउट के अंदर ही मिल जाएंगी. एंड यू विल सी कि इसके मेजॉरिटी लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑलमोस्ट 8 ऐसे वेरिएशंस हैं जिनकी फिर भी कुछ ना कुछ सेल्स आ रही हैं, जिनके जो BSR है दैट इज़ लेस देन 100,000. उसके अलावा जितने भी इसके, ओके, दिस इज़ नॉट एक्चुअली सॉर्टेड. So even after sorting, there are roughly around 9 or 10 products जिनकी सेल्स आ रही हैं. बाकियों के जो सेल्स रैंक हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं. सो व्हाट वी कैन सी इज़ के इवन दो दिस प्रोडक्ट, इसके 126 सेलर्स हैं. नाउ द नंबर ऑफ सेलर्स इन दिस प्रोडक्ट्स आर क्वाइट हाई. दिस शोज वन थिंग के या तो इस प्रोडक्ट को रीसेल करना बहुत ज़्यादा आसान है. इसके सप्लायर के या जो डिस्ट्रीब्यूटर है, ब्रांड तो डायरेक्टली मुश्किल है. इसके डिस्ट्रीब्यूटर से इसकी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना काफ़ी ज़्यादा आसान नज़र आ रहा है. अब दिस कुड बी अ रेड फ्लैग एज वेल, लेकिन इसके अंदर से अपॉर्चुनिटी भी निकाली जा सकती है. फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी आर एबल टू कनेक्ट विद दिस ब्रांड एंड वी टेल देम कि हाउ वी कैन एक्चुअली ऐड वैल्यू, और इतने ज़्यादा सेलर्स के साथ डील करने की बजाय दे कैन एक्चुअली डील विद अस ओनली, कि हमें एक वो छोटा सा पोर्शन दे दें पूरे के पूरी ब्रांड की एक्सक्लूसिविटी के बजाय. अगर वो हमें कुछ एसेंस की या कुछ SKUs की एक्सक्लूसिविटी दे दें तो वी विल बी एबल टू मेक अ वेरी गुड बिजनेस आउट ऑफ इट. नाउ दिस इज अपॉर्चुनिटी. लेकिन स्ट्रेट अवे न्यूबीज़ के लिए इस तरह की डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है.
रेड फ्लैग ये इस तरह से है कि बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ सेलर्स अवेलेबल हेयर एंड मुमकिन है कि इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्राइस वॉर भी हो रही हो. वी कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. आगे अगर चलें तो नंबर ऑफ सेल्स इसके काफ़ी अच्छी आ रही हैं. और शुरू के 2-3 प्रोडक्ट्स अच्छी सेल्स ले रहे हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू विल बी एबल टू सी के जैसे जैसे BSR इंक्रीज हो रहा है, सेल्स कम हो रही हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नंबर ऑफ रिव्यूज़ आर क्वाइट लो. अच्छा, इससे भी हमें एक आइडिया हो रहा है क्योंकि ये ब्रांड शायद अमेजोन के ऊपर न्यू है, इस वजह से इसके ऊपर इतनी कोई खास सेलर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड एवरीवन इज़ एक्चुअली सेलिंग इट. और बाय द टाइम ये थोड़ा सा पुराना होगा तो एंड मुमकिन है कि ब्रांड इसके ऊपर मज़ीद कंट्रोल रखना शुरू कर दे. अगेन देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि हम ब्रांड को रीच आउट करके कह सकते हैं कि right now you are not having a lot of control over your products on Amazon. So what we can do is we can help you create that control. And after providing this kind of value proposition, we will be able to have a good chunk of the sales if they agree. आगे अगर चलें, you'll be able to see कि even though the number of sellers are like 126 here, उसमें से FBA seller 82 हैं, so FBM भी काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्ट हो रहा है. After seeing product data, if this makes sense to you, what we can do is we can see the kind of sellers who are selling these products. And here what we can do is we can see कि for example this particular seller ये तकरीबन 11% इस brand को बेच रहा है. Now this section is also very much important क्योंकि यहाँ पे we can use this to do super targeting as well. If this particular brand is something I want to sell, इसके sellers को भी मैं evaluate करते हुए देख सकता हूँ कि if these are few things या you know these are the sellers who are selling items which are of my interest, और मैं इनको super targeting के लिए उनके seller ID के through shortlist कर सकता हूँ. Moving forward, I can see here the marketplaces where this brand is selling. And right now it is selling in US, it is selling in UK but not very good. It is also selling in Canada, लेकिन वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड अवेलेबल नहीं है. तो this is how you can use Smart Scout. Another feature of Smart Scout is कि यहाँ पे एक option available है by the name suppliers. And there are roughly around 2,000 plus leads available of distributor all around the US. There are few available outside of US as well. So what you can do is you can search for these distributors. आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं. You can see if the items available make sense to you, and you can shortlist the leads from here as well. इस वीडियो को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं. Thank you very much.